Hello everyone, a very good evening. So, last lecture में we had already started our discussion on applications of trigonometry. हमने देखा that trigonometry is a wide field which has got variety of applications. I mean whether we say in the field of science, mathematics, astronomy, geology, geography, हम सभी जगह पे trigonometry को use करते ही करते हैं. So it has got a very big application. I mean I'll say in almost all the fields. और इसमें से हमने एक मेजर एप्लीकेशन कल डिस्कस की थी, दैट वाज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं. और इसी के रिलेटेड हमने कुछ कल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी. द मेन टर्मिनोलॉजीज दैट वी स्टडीड वर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट. आई होप ये सारी टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है और इन्हीं के एप्लीकेशन में बेस्ड हमने एक आधो इलस्ट्रेशंस भी कल देख लिए थे. Now what we are going to do is we are directly going to switch to the sheet discussion. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस वाले टॉपिक में कुछ ज्यादा थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है. इट्स नॉट अ थियोरेटिकल टॉपिक एट ऑल, बिकॉज जो कुछ भी थ्योरी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ी, फंक्शंस में पढ़ी, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ी, आई मीन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर गोना अप्लाई हियर. सो कुछ कॉन्सेप्चुअली में अलग से नहीं पढ़ना है. इनफैक्ट ऐसे जो भी अभी तक पढ़ा था उसी के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं. और शीट डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट फिर से बोलना चाहती हूँ, दैट इज डू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, बिकॉज इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू एनालाइज द सिचुएशन एंड रीड द क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंड इट केयरफुली. उसके बाद क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी इजिली बिकॉज वो सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जानते हैं. सो लेट अस सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन और देखते हैं. I mean, I think it's not a tough sheet at all because in fact starting के 5 to 6 questions are very elementary, like normal applications of trigonometry of heights and distances, and after that there are some good conceptual questions even. So let us discuss each question one by one. Okay, so let us start with the first question. First question is, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degrees. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degrees. We have to find the length of the flagstaff and the distance of the building from a point P. अब देखिए first question को समझते हैं. What they are telling is from a point P on the ground. So we have a point P on the ground. So let us say this is our ground level and this is that point P. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degrees. So let us say this is our 10-meter tall building AB. और P से इसका angle of elevation क्या दिया है? 30 degrees. That is what they say. From the ground, point P, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degrees. Which means from P, this angle is 30 degrees. Angle of elevation हम सभी जानते हैं, the angle found by the line of sight with the ground. और line of sight क्या है? जो लाइन ऑब्जर्वर को जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करें उससे ज्वाइन करती है. So this angle is 30 degree and we know this building has a height of 10 meters. Okay. फिर क्या कह रहे हैं? What they say further is a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degrees. तो इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ होस्ट किया है, ठीक है. देयर इज अ फ्लैग विच इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. लेट अस से दिस इज दिस फ्लैग एंड लेट अस से दिस पॉइंट ओवर हियर इज C. द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज C. और ये कह रहे हैं द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब C का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट P इज 45 डिग्रीज. So they want to say us that this angle over here is 45 degrees. Correct? जो फ्लैग स्टाफ का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P is 45 degrees, which means this line PC, this line of sight PC makes an angle of 45 degree with the horizontal. ठीक है? Based upon this, we have to find the length of the flag staff. ठीक है? And the distance of the building from the point P. So हमें P से बिल्डिंग का डिस्टेंस पता करना है और इस फ्लैग स्टाफ की हाइट पता करनी है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस PB? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. आई कैन राइट tan 30 degrees will be equals to
AB upon PB, right? Is that true? And what is tan 30 degrees? It is 1 upon under root 3, which means we know what is AB, we know AB is already 10, this implies PB is 10 root 3 centimeters, exactly, meters, sorry. So PB is 10 root 3 meters, which means this distance of point P from the building is 10 root 3 meters. ओके, अब हमें पता करना है इस फ्लैगस्टाफ AC की हाइट. So what we can do is I can write tan 45 degrees is BC upon PB. True, tan 45 degrees is 1 and I know PB is 10 root 3 centimeters. 10 root 3 meters, sorry, which means BC is 10 root 3 meters. I know AB is 10 meters and BC is 10 root 3 meters. This implies AC is 10 root 3 minus 1 meters. So the height of the flagstaff is 10 into root 3 minus 1 meters. Clear है? बहुत ही easy सा question था. A very elementary application of heights and distances. I just wanted you to be acquainted with these terminologies like angle of elevation, distance. Just normal terminologies. I wanted you to get acquainted. So question clear है? A very very elementary question, nothing special at all. Okay. So second question देखें इसी के साथ. Okay. Now let us see what second question says. The shadow of a tower standing on a ground level is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degrees. What then when it was 60 degrees? So ये क्या कह रहे हैं? The shadow of a tower standing on a ground level is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60 degree. मतलब जब 30 डिग्री ऑल्टीट्यूड पे जो शैडो बनती है वो 40 मीटर्स बड़ी होती है कब? जबकि शैडो 60 डिग्री एंगल पे बनती हो, है ना? We have to find the height of the tower. तो देखिए सिचुएशन समझिए. Let us say this is the ground और यहाँ पे ये हमारा टावर है. Okay? This straight is my tower, something of this sort. कुछ इस तरीके का टावर होगा. ठीक है. So let us say this AB is our tower. Perfect. अब क्या कह रहे हैं? जब सन की अल्टीट्यूड 30 डिग्री होती है और 60 डिग्री होती है. ओके. So they are telling जब सन की अल्टीट्यूड the shadow is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when the sun's altitude is 60 degree. तो 30 डिग्री पे शैडो 60 डिग्री के कंपैरिजन में 40 मीटर्स बड़ी होती है. ओके. सो लेट अस टेक when sun's altitude is 30 degree. तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी. Let me draw. Okay. So this is the point where sun's altitude is 30 degree and let us take a point where sun's altitude is 60 degree. Okay. So at one point of time हमारा sun यहाँ पर है. Okay. And at one point of time my sun is at this position. True? Any doubt till this point? अब देखिए, when sun's altitude is 30 degrees, the shadow is 40 meters longer than when the sun's altitude is 60 degrees. Okay? So this distance over here is 40 meters. True? या फिर मैं ऐसे कहूँ, let us say when sun's altitude is 30 degrees, the shadow is AB. And when sun's altitude is 60 degrees, the shadow is BC. So it is very clearly mentioned that AB minus BC is nothing but 40 meters. That is what mentioned in the question. Exactly. See, वापस से पढ़ो एक बार. They say the ground
the shadow is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degrees than when sun's altitude is 60 degrees. Clear? Okay, so I know this angle over here, sun's altitude as given here is 30 degrees. So ये angle भी हो गया 30 degree and this angle over here is 60 degrees, which means even this angle over here is 60 degrees. Clear है? इस basis पे what we have to find is we have to find the height of the tower. अब देखिए height of the tower हम कैसे निकालेंगे? I can write tan 30 degrees as AB upon let me call this point as P. Okay, building की height को हम P बोलते हैं, PB. So PB upon AB is tan 30 degrees. Is that correct? Which means PB and tan 30 degrees is 1 upon root 3 is PB upon AB. True. Which means AB is root 3 times PB. Correct? Perfectly correct. And similarly I can write tan 60 degrees as PB upon BC. True. Which means BC and tan 60 degrees we know is root 3 upon 1 is PB upon BC, which means BC is PB upon root 3. Correct? Now I know AC, which is AB minus BC. So AB minus BC is 40 meters. Okay, which is root 3 minus 1 upon root 3 into AB, sorry, into PB is 40. और इसे सॉल्व करके हम PB की वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर है क्वेश्चन? इजी था, जस्ट ये ऑल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट समझना था. सो व्हाट इज सन्स ऑल्टीट्यूड, फर्स्ट डेफिनेशन ये जाननी थी, और दूसरा कि किस तरीके से हम सन के ऑल्टीट्यूड से किसी भी टावर की शैडो निकालते हैं. क्लियर है क्वेश्चन? वाज एन इजी वन, आई मीन नॉट अ डिफिकल्ट वन एट ऑल. ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें. जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए. लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड क्वेश्चन. ओके, let us see third question now. So third question is, from a point on a bridge across the river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meters from the banks, find the width of the river. So what is third question? Third question says, from a point on a bridge across a river, the angles of the depression of the banks on the opposite side of the river are 30 and 45 degree respectively. मतलब एक रिवर है और उसके ऊपर एक ब्रिज बना है. अब उस ब्रिज के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों ऑपोजिट बैंक्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री. फिर दिया है दिस ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स above the ground level. I mean रिवर के बैंक से उसकी हाइट है 3 मीटर. So from the ground level its height is 3 meter. Okay, we have to find the width of the river. So situation देखिए, situation कुछ ऐसी है. Let us say this is our river. Okay, ये हमारी river होगी कुछ इस तरीके से. True. So this is one bank of the river A and this is the other bank of the river B. Perfect. अब इसके ऊपर एक ब्रिज बना है. ठीक है, let us say this is our bridge. Okay, so this guy over here is our bridge. कुछ इस तरीके का ब्रिज बना होगा.
Perfect. And this is my river. Okay. Now let us say there is a point P over here on the bridge. This is my point P, and there is a person sitting over here and who is observing the two banks. Okay. जब ये बैंक A को देखता है तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 45 डिग्रीज, और ये जब बैंक B को देखता है तो इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 30 डिग्रीज. ट्रू. एंड वी नो दिस ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 meters फ्रॉम द बैंक. ओके. सो इस ब्रिज की हाइट है 3 meter, which means this person P over here, it is at a height of 3 meters from the ground level. वो जब बैंक B को देखता है तो उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज, और जब बैंक A को देखता है तो उस एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्रीज. ट्रू. सो आई कैन से दिस एंगल ओवर हियर इज 30 डिग्रीज एंड दिस एंगल ओवर हियर इज 45 डिग्रीज. अब इस डेटा को यूज करके व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ माय रिवर. So basically we have to find this distance AB. Let us say this point over here is P dash. Okay. अब बताइए, after analyzing this situation, I think data tank of the width of the river निकालना is very easy. We can see, देखिए, I can write tan 45 as PP dash upon AP dash. True. And I know PP dash is 3. So it is 3 upon AP dash, which means AP dash is 3. And similarly I can write tan 30, which is 1 upon root 3 is P dash upon BP dash. True. Which means BP dash is 3 root 3. And width of the river is AP dash plus P dash B, which comes out to be 3 into root 3 plus 1 meters. This is my width of the river. So देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी था. इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन प्रॉपर्ली और इस तरीके से एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर ले तो उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अ केक स्पाई, देयर इज नथिंग लेफ्ट. So that is what I always say कि इस तरीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक बार उसे इस तरीके के लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर ले तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. ओके. सो लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन. ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Situation देखिए, they are telling कि they have a tree. Okay. So let us say this is our tree for now. Okay. कुछ इस तरीके का ट्री होगा. Okay. And let us say this tree is AB. Okay. Now what they say is this tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. So let us say इस point P से ये tree break हो जाता है. Okay, due to storm from this point P the tree breaks. So अब ये tree कुछ इस तरीके का होगा. देखिए, this tree is going to be something of this form. True. So this is A, this is P and this is B. Okay. Next what they are telling is the top of the touches the ground making an angle of 30 degree with it, which means this tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. Okay. Next what they are telling is the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters, which means distance between the foot of the tree to the point where the tree touches the ground is 8 meters. Okay. We have to find the height of the tree. Okay. Now if I try to
कन्वर्टेड इन लाइन डायग्राम. लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी होगी. दिस इज गोइंग टू बी PB and this is going to be, sorry, this is going to be, yeah, यहाँ पे मैंने गलत लिखा. This point is going to be B and this point is going to be A. This is going to be PB और ये होगा PA. This angle is going to be 30 degrees and this distance is going to be 8 meters. And we have to find the height of the tree. Height of the tree is nothing but AB, which is equals to AP plus PB. अब यहाँ से हम PB कैसे निकालेंगे इस एंगल से? It is very easy. You can write tan 30, which is 1 upon root 3 is going to be PB upon AB, which is 8. So PB is 8 upon root 3 meters. True? Or similarly, I can write cos 30 as root 3 by 2, which is 8 upon AP. So AP turns out to be 16 by root 3 meters. So what is the total height of my tree? It is AP plus PB, which is 8 plus 16 upon root 3 meters. Clear है सभी को क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन था. I mean, just comprehending the question was again an important part here, but otherwise the question was really easy. Okay, so let us proceed to the fifth question now. Fifth question is a bit interesting one. Okay, so इसे नोट डाउन करिए, फिर फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.